नमस्कार पीडब्ल्यू ओपीएससी वाला को समस्त को स्वागत। तो आम ऑलरेडी डिस्कशन सीरीज स्टार्ट करथिले ऑन द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। या पूर्व आम तीनटा सीरीज रे डिस्कशन कर सारिचे तीनटा डिफरेंट डिफरेंट वीक रो हिंदू एडिटोरियल। आज आम डिस्कस करबा फ्रॉम 19 टू 24th ऑफ अगस्त ये वीक। So these are the topics to be covered. Important topic like declining share of GDP in the social welfare schemes like Manrega, National Food Security Act, significance of Khadi in India's national identity, impact of Bangladesh issue जोड़ा बर्तमान बहुत अधिक चली कि बांग्लादेश की माइग्रेंट माने इंडिया को आसुचंती आमे तार इम्पैक्ट कोन देखिबा इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे। देन कोटा फॉर लोकल्स ये कर्नाटका रो गोटे लोकल लॉ ऊपर हम लास्ट टाइम मते डिस्कशन करिथिले द सेम सीरीज रे एई हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस रे आज हमें तार ऊपर आ कुछ एक्सटेंशनल एनालिसिस करबा ऑन कोटास फॉर लोकल्स इन जॉब। then a ground plan for sustainable mass employment, rate of unemployment gradually increase होगा को जाउची इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ुची बाद में कहबे देयर इज ग्रोथ बट देयर इज जॉबलेस ग्रोथ। जो ग्रोथ होउची दैट इज जॉबलेस, जॉब क्रिएशन हे करू नाही and hence impact of poverty, impact of unemployment, malnutrition, hunger ए टाइप रो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज गुडा का हमको अधिक रु अधिक इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे देखिया पई मिलुची। then we'll be talking about the essence of India's inflation problem। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंडिया मध्ये बढ़ी बढ़ी चलुची स्पेसिफिकली जदि हम फूड आइटम मानक ऊपर देखिबा प्रत्येक वर्ष रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन फूड आइटम्स इज 10%। जदि ए वर्ष गोटे फूड आर्टिकल रो प्राइस 100 टंका अछि नेक्स्ट ईयर से पाखा पाखी 110 टंका हे जाउची। सो दिस इज द वेरी अलार्मिंग कंडीशन और दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर। then we'll be talking about ensuring social justice in bureaucracy। bureaucracy रे social justice हमें केमती ensure करि परिबा बा जो माने vulnerable section, marginalized section of the society, how they can be well represented in the entire bureaucratic system of the country, because we are living in a democratic country and the very basic essence of democracy or the cornerstone of democracy is establishing social justice। now social justice केमती establish हे परिबो ना जो माने vulnerable section बा marginalized section of society, they need a proper representation in the job रे कोंतु बा political sphere रे कोंतु socio economic sphere रे कोंतु प्रत्येक जगह रे they need a proper representation। so through representation we can ensure social justice in bureaucracy। so जेहेतु किछि specific community बा marginalized community मानकर share bureaucratic structure रे कमी कमी आसुची बा as compared to the upper caste it is found to be lower। एई ग्राउंड रे हम ये टॉपिक ऊपर आज डिस्कशन करबा on ensuring social justice in bureaucracy। so these are the broad or important topics which needs to be discussed today itself। या पूर्व हमें लास्ट क्लास रे डिस्कशन करथिले ऑन डिफरेंट टॉपिक्स लाइक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन सिविल लिबर्टीज बा यूनिफॉर्म सिविल कोड ऊपर हमें डिस्कशन करथिले लास्ट टाइम मध्ये। देन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट, फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस, अ न्यू एरा इन हेल्थ केयर सेक्टर ऊपर मध्ये लास्ट टाइम हम डिस्कशन करथिले। now this is the recap of last session। now let's come to just a brief why current affair is important for our examination। why is current affair important for our examination? मु इकोनॉमिक्स रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस कला बेले ऑलरेडी देखैतिली कि लास्ट ईयर एग्जाम रे बदले हम देखिबा प्रीलिम्स, ओपीएससी प्रीलिम्स, ओपीएससी ओसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रे जदि हम देखिबा केते आसितला क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जदि हम देखिबा करंट अफेयर बेस्ड पे हिंदू एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन 80% आसितला। 20 एटा 2022 रो कथा कहूची। देन 2021 रे जदि हम देखिबा अप्रोक्सीमेटली 40% क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड रथिला बट डायरेक्टली इट वाज फॉर्म फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। तो सेठी मु लिंक सहित मध्ये बुझेइतिली। ए ग्राउंड रे जदि हम देखिबा बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस करंट अफेयर हम पे बहुत बहुत इंपोर्टेंट। ताले करंट अफेयर अनेक गुडे सोर्स अछि जदि हम सोर्स देखिबा इन जनरल ताले डे टू डे बेसिस पे देयर इज द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जोटा गोटे वीकली मैगजीन, योजना कुरुक्षेत्र योचंती मंथली मैगजीन ऑन इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, देन ज्योग्राफी एंड यू डाउन टू व्हाट ये सब एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी रिलेटेड मैगजीन्स, फ्रंटलाइन सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड मैगजीन, देन वर्ल्ड फोकस अगेन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को एशियन कॉन्टिनेंट बा स्पेसिफिकली इंडिया को ये फोकस करे, then science reporter आपनकर साइंस पोर्शन को कवर करिया पे। now this is a very exhaustive list। एते गुडे लिस्ट पढिबा जनरली इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट कि गोटे मासरे सर एते टॉपिक केमती पढिबु, एते गुडे मैगजीन केमती पढिबु। ताको सिंपलीफाई करिया पे मु सिंपल कहबी कि हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस इज इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग ऑल। तो जो माने डेली पढि पारुचंदी इट इज वेल एंड गुड, जो माने न पढि पारुचंदी बा इवन जो माने पढुचंदी से माने ये क्लास को फॉलो करंतु। ए क्लास रे
आमे एग्जॉस्टिवली नहेले मध्ये कॉम्प्रिहेंसिवली जहाँ जहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंट ताको पढ़िबा काहे कि ना मेनी टाइम स्टूडेंट्स हैव अ जनरल और जेन्युइन डाउट सर एते गुडे टॉपिक अछि हिंदू रे मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी को पार्ट को पढ़िबो को पार्ट को छाड़िबो को एडिटोरियल टा हम पई इंपोर्टेंट सो एडिटोरियल को एडिटोरियल हम पई इंपोर्टेंट बा को टॉपिक हम पई इंपोर्टेंट सेटा हम सिलेबस अनुसार देखिया पई पड़िबो हम प्रॉपर्ली हम सिलेबस अनुसार देखिया पई पड़िबो so political news remarks local politics sports entertainment death awards related news ये सब हमको डिक्रीज करिया पई पड़ो ये सब पढ़िबा कोन से आवश्यकता नाही बिकॉज़ हम एग्जाम रे एथि किछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आसना है देन व्हाट टू स्टडी को पोर्शन को हम पढ़िबा दरकार को पार्ट को पढ़िबा द मोस्ट इंपोर्टेंट इज सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज सोशियो लीगल इश्यूज ये सब हम पे इंपोर्टेंट बा कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इश्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रे जदि इंपोर्टेंट वर्डिक्ट आसी जदि सिक्योरिटी इश्यूज अच्छी लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रेड कॉरिडोर रे बा इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जम्मू कश्मीर रे मिलिटेंसी रिलेटेड जदि किछि इश्यू अच्छी कम्युनल वायलेंस रिलेटेड जदि किछि इश्यू अच्छी साइबर सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब हम पे इंपोर्टेंट देयर इज इश्यूज फॉर वल्नरेबल सेक्शन जहा को सोशियो इकोनॉमिक बा सोशियो लीगल पार्ट बोली कहूचे जेंति आज रे टॉपिक रे गोटे इश्यू मु डिस्कस करबी वल्नरेबल सेक्शन रे रिप्रेजेंटेशन और एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इन द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री ensuring social justice in the bureaucratic system of the country सेटा होची गोटे that particular article is for the vulnerable section of the society now IR related issues मध्ये हम पे important जेंते बांग्लादेश ऊपर आज डिस्कशन करियो what is the impact of crisis in Bangladesh on India बांग्लादेश रे वर्तमान करंटली चलितबा क्राइसिस रो इंडिया ऊपर कोन इंपैक्ट अछि ता ऊपर आज हम डिस्कशन करियो सो दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो गुडा का हमको ध्यान देबा को पड़े जेतबे हम पढुचे हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बा करंट अफेयर सो आको पढ़िया पई बुझिया पई हेले हमको सिलेबस प्रॉपर्ली पढ़िया दरकार सिलेबस को मन रखिया दरकार माइक्रो सिलेबस एनालिसिस करिया दरकार को जीएस पेपर 1 रे को सब्जेक्ट अछि को सब्जेक्ट रे को टॉपिक रे को सब टॉपिक अछि ये सब हम पई इंपोर्टेंट नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज रो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करिया just a second all right so first topic ko asila aji first topic hoji this issue is related to declining share of gdp in social welfare schemes so social welfare related scheme kon अछि हम पाखरे जदि यार मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल मु देबी मु इकोनॉमिक्स क्लास कोला बेला को पढै छी यार ए को पेपर आसुछ ताले ये पेपर कोन जीएस 1 2 3 4 भीतर जदि हम देखिबा जीएस 3 पेपर जीएस 3 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हला इकोनॉमिक्स टॉपिक कोन ना टॉपिक होजी सोशल वेलफेयर स्कीम्स रे नै परिवार सोशल वेलफेयर स्कीम्स बा बजेटरी एलोकेशन ने मध्ये रिसोर्स एलोकेशन ने मध्ये आको पढिया दरकार हैला तो ये क्वेश्चन ये टॉपिक कहां पर डिस्कशन करूची ना ये कुछ अनेक गुडे सोशल वेलफेयर स्कीम अछि एग्जांपल कोन ई टाइप रो सोशल वेलफेयर स्कीम रो मुई मन नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यार ऑब्जेक्टिव कोन फूड सिक्योरिटी एक्ट रो 100 डेज ऑफ सॉरी फूड सिक्योरिटी एक्ट रो ऑब्जेक्टिव कोन ना ensuring food to all accessibility availability एवं affordability increase करिवा then मनरेगा रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन यार ऑब्जेक्टिव होची 100 days of work this is the legal right 100 days of work per year प्रत्येक वर्ष ये 100 दिन रो वर्क प्रोवाइड करियो हैला सो ये ला इवरा सब कोन कहै छै सोशल वेलफेयर स्कीम these are for socio economic development of the country for socio economic development of the country so जे हमें फूड सिक्योरिटी एक्ट रे एक्सपेंडिचर देखिबा लास्ट ईयर थिला टोटल जीडीपी रो 0.72% लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर केते थिला 0.72% ऑफ जीडीपी ए वर्ष हो जाय छै 0.63% ऑफ जीडीपी टोटल जीडीपी रो 0.63% एलोकेशन है छै कहा को ना ये पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सेकंड पार्ट को आसंतु मनरेगा रे कथा एटा 0.29% थिला लास्ट टाइम एबे डिक्रीज करके जाय छै 0.26% कहा मन एमती भी डाउट आसु सही पारे कि सर 0.29 और 0.26 0.03% रो डिफरेंस तो बेसिक कोन इंपैक्ट पकड़ो वर्तमान देखो तो 0.03% कहा टोटल जीडीपी रो वैल्यू केते लानी बहुत अधिक सो 0.03% जदि हम देखिबा ये बजेटरी एलोकेशन अनुसार यार क्वांटिटी बहुत अधिक सो स्पेसिफिकली जदि हम देखिबा दिस इज लाइक अ नेग्लेक्ट टू द वल्नरेबल ग्रुप्स vulnerable group को माने vulnerable
ना फूड सिक्योरिटी मिशन को मानको पई ना दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक्सेसिबिलिटी नाही, अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी टू द फूड ग्रेन्स नाही, ताको हम कहूजे से माने बा जो मन को कहूजे बिलो द पॉवर्टी लाइन और दे आर पोरेस्ट अमंग द पोर, दे आर पोरेस्ट अमंग द पोर। जदी एग्जांपल कहबी ओडिसा रा केबीके रीजन very much infamous throughout the world for malnutrition, for hunger, for unemployment, for high incidence of absolute poverty। एठी हम देखुचे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एठी accessibility, affordability and availability increase होची टू फूड ग्रेन्स। देयर इज मनरेगा मध्ये सेम कथा कहि, सो मनरेगा कहा अपना जो मानकर पाखरे जॉब नाही, जो माने जॉबलेस और दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, जो माने पॉवर्टी हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी रे अछंती, ये समान को पई 100 डेज रो वर्क प्रोवाइड करछि, ता माने वल्नरेबल ग्रुप। सो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप को माने दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। सो ये कहूची कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इट सपोर्ट्स विडोज, इट सपोर्ट्स एल्डरली, डिसेबल्ड इंडिविजुअल। सो देयर इज नो इंक्रीज इन द नॉमिनल बजट एलोकेशन। शेयर जदि जीडीपी रे देखिबा हमें 2014-15 रे यार सटला 0.06%, वर्तमान 0.03% रे जाइछि, 0.03% नाउ reduced to almost half। so एटा देखो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ये कहां पाई, दिस इज फॉर द वल्नरेबल सेक्शन। सो विडो कोंतु, एल्डरली कोंतु, पीडब्ल्यूडी, डिसेबल्ड पर्सन कोंतु, ए माने कोन ना माने होचंती एटी जे हम देखिबा शेयर ऑफ जीडीपी डिक्रीज ऑलमोस्ट ना हाफ हो जाइछि। देन देखो चाइल्ड मालन्यूट्रिशन और वेलफेयर पर्टिकुलर सेक्शन पे हमें चाइल्ड मालन्यूट्रिशन और वेलफेयर स्कीम अछि हम पाखे कोन ना सक्षम अंगनवाड़ी पोषण 2.0। सो यार ऑब्जेक्टिव कोन ना चाइल्ड मालन्यूट्रिशन को डिक्रीज करिया पई। ओडिसा रे चाइल्ड मालन्यूट्रिशन पई हितला किछि दिन तळे नगड़ा शिशु मृत्यु, जहा पर समस्तकर अल्प बहुत नॉलेज थिबो। नगड़ा शिशु मृत्यु कोन पई हितला ना बिकॉज़ ऑफ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। सो हाई इंसिडेंस ऑफ मालन्यूट्रिशन हमको देखिया पई मिलिला। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन दोस रीजन इज मैक्सिमम। सो ए भलिया स्कीम आसला चाइल्ड मालन्यूट्रिशन को हटिया पई, ये स्कीम आसला लाइक सक्षम अंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। एठी मध्ये बजेटरी एलोकेशन डिक्रीज जाइछ। मिड डे मील स्कीम जोटी बेनिफिट मिलुचे हमको फॉर 12 करोड़ चिल्ड्रन दे आर गेटिंग फूड। सो दिस इज अ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम एज वेल। एजुकेशन को इंक्रीज करूची, फूड सिक्योरिटी एनरोलमेंट को इंक्रीज करूची, प्लस अटेंडेंस रेशियो को इंक्रीज करूची, प्लस ये फूड सिक्योरिटी मध्ये एटी प्रोवाइड करूची, न्यूट्रिशन मध्ये एटी प्रोवाइड करूची। हला तो एटी मध्ये जदि हम देखिबा देयर इज 50% रिडक्शन इन द जीडीपी, 50% रिडक्शन इन द जीडीपी। जब हम हेल्थ सेक्टर को देखिबा, हेल्थ सेक्टर रे बजेट एलोकेशन इज इंक्रीज्ड केते ना 2014-15 रे एटा थिला 0.25%, नाउ इट इज इंक्रीज्ड टू 0.28% दिस ईयर। बट दिस इज इनसफिशिएंट। हेल्थ केयर फैसिलिटी ऊपर तो डिस्कशन करले इकोनॉमिक्स क्लास रे, सेठी हम करले मिनिमम रिक्वायरमेंट केते एठी ना जीडीपी रो 2.5%, 2.5% ऑफ जीडीपी रो इन्वेस्टमेंट कोथरे दरकार ना हेल्थ केयर सेक्टर रे। नाउ केते होची देखो 1% भी होनी, 0.28% ओनली, 0.28% ओनली। सो ये सब इश्यू हमको काहे की देखिया को मिलुची ना, बिकॉज़ जदि हम देखियो बजेट इज अबाउट गवर्नमेंट रिसीट बा रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। नाउ गवर्नमेंट रा एक्सपेंडिचर इज मोर एज कंपेयर टू द रेवेन्यू। रेवेन्यू अपेक्षा गवर्नमेंट रा एक्सपेंडिचर अधिक, जोटा हम बजेट क्लास रे पढिथिले कि गवर्नमेंट रा डिफरेंट टाइप ऑफ रेवेन्यूज आर देयर, लाइक टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू। वर्तमान देखंतु गवर्नमेंट रा सबटु गोटे बड़ सोर्स होची कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट हाउस मानको जो टैक्स मिलि थाए गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट एटी एई वर्ष कोन करचंदी ना कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस कर दिया जायछि, हैला। सो देयर इज अ कट डाउन इन द कॉर्पोरेट टैक्स रेट, हैला। केबेटू एटा हलानी ना कॉर्पोरेट टैक्स ग्रेजुअली केबेटू हमको डिक्रीज हला देखा जाउछि ना 2019। सो इट लीड्स टू लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट रे कमी जाउछि पाखा पाखी केते ना मोर देन 8 लाख करोड़ रुपीस। टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट केते रिड्यूस कमी जाउछि केते, कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस कला पर ना पाखा पाखी 8 लाख कोटी। सो इट रिड्यूसेस द फिस्कल स्पेस, ऑटोमेटिकली फिस्कल डेफिसिट बढ़ी जाउछि, रेवेन्यू कम एवं एक्सपेंडिचर एटी अधिक होई जाउछि, हैला। So there is the overall decline in the government expenditure. In the same way social sector रे यार impact होची, social sector spending मध्ये decline होची। So total allocation for welfare schemes it has been decreased from
2.1% of GDP in 2014-15 to 1.53%. Now 2.1 to 1.53% is reduced. So COVID-19 period रे मधे जदि हमें देखिबा 4.31% during COVID-19, 4.31%. So the social sector spending टा social sector expenditure टा हमको अधिक करिवा दरकार, because we have to ensure social justice as well. As a democratic country, गोटे country रो सबसे basic objective कोन ना social justice ensure करिवा. So social justice केमती ensure करा जाय जीवो ना जेतेबेले हमें vulnerable बा marginalized section को protect करि पाइबा. Then what is the way forward? Now we discussed about the problem. कौन कौन problem होतला हमें से सब discussion कर देले. Now what is the way forward? कौन यार solution नहीं पाए? यार proper solution कौन नहीं पाए? First solution यदि हमें देखिबा ना strategic planning with increase in welfare allocation. Welfare allocation को ये increase करिया पाए कहूची बा ये vulnerable section ऊपर अधिक expenditure करिया पाए कहूची. Social expenditure को increase करिया कहूची. To increase the social expenditure. बुझी पारले समझते? ना हाउ कौन करिया दरकार ना इन्वेस्टमेंट इन रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. एटा हले कोन हो ना रूरल डेवलपमेंट खाली होनी, रूरल डेवलपमेंट सहित एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मध्ये हो. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जदि चले रूरल डेवलपमेंट हो, देयर विल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इंक्रीज हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंक्रीज हो. 24/7 ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हो एटी बा हम जदि कहबा ऑल वेदर रोड खरा वर्षा शीत प्रत्येक समय जो रास्ता को व्यवहार करा जाई परिबो से बळे रास्ता में पाई परिबो. सो एठी देखुचे हमें कोन ना देयर इज इन्वेस्टमेंट इन रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स लाइक पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यदि इंक्रीज हुए दैट विल लीड टू और दैट विल रिजल्ट इनटू रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द रूरल एरिया. प्लस आउ कोटी इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करि परिबो गवर्नमेंट ना वुमेन और चाइल्ड हेल्थ रे इंप्रूव करि परिबो. 4% ऑफ चिल्ड्रन दे आर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्टफेड and only 11% receive a minimum adequate diet. देखो category 4% of children they are completely dependent or exclusively breastfed. ସେଥିରୁ 11% they receive minimum adequate diet. So there is a question of increasing the nutritional availability. जेतरा हम poverty ऊपर discussion करथिले सेति मध्ये पढिथिले poverty allocation केमति होतला, poverty estimation केमति होतला ना 2400 calorie in the rural area and 2100 calorie in the urban area. A grounded proximity poverty estimation होतला. So nutrition is the most important aspect. The minimum nutrition हमको मिलुनी, so we cannot have the minimum health. So right to health, this is the basic right or fundamental right. If our right to health nahi, minimum nutrition हमको मिलुनी, automatically our contribution to the GDP will be decreased. Production हमें करि परिबानी, काम करि परिबानी, and hence GDP decrease करियो. So A grounded जदि हमें देखिबा जो माने को मिनिमम एडिक्वेट डाइट मिली पारु नाही बा जो दिस इज ओनली 11% ताकू इंक्रीज करबार आवश्यकता अछि. सो वी हैव टू इंक्रीज द एलोकेशन फॉर न्यूट्रिशन सेंसिटिव प्रोग्राम्स लाइक पीएम पोषण हमें एड्रेस करबा एनीमिया टाइप ऑफ डिजीज को रिड्यूस करिया. देन हाउ कोन करि परिबा वी हैव टू लिवरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जोडा हमें पीपीपी मॉडल कहूचे कोन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कोडी इन एजुकेशन एंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर. इन एजुकेशन and in infrastructure. So infrastructure को develop करि परिबा, quality education एवं quality infrastructure को develop करि परिबा केतबेले ना when there is a cooperation between public sector as well as the private sector. So this approach has been successful in other sectors so that it will decrease the gap in educational resources. Private sector तो interfere करे, private sector इंटरफेयर कला पर बेनिफिट कोन हबो ना ये अधिक रिसोर्स अछि आ पाखे, ये अधिक इन्वेस्टमेंट करि परियो प्राइवेट सेक्टर आ कोन करि परियो ना टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करि परियो या पाखे बेटर ह्यूमन रिसोर्स अछि एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट सेक्टर. एही कारण पय जदि हम देखिबा पीपीपी मॉडल रो बहुत अधिक रिलेवेंस अछि फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आ कोन करि परियो ना सोशल सिक्युरिटी ऑफ पेंशन स्कीम को इंक्रीज करि परियो, सोशल सिक्युरिटी ऑफ पेंशन स्कीम को इंक्रीज करि परियो. वी कैन हैव सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. Now A part रे ऊपर ए देखो सोशल सिक्युरिटी पार्ट रे एठी हमें कोन कले ना हियर अगेन वी आर एंश्योरिंग सोशल जस्टिस. एठी हमें कोन करछे सोशल जस्टिस एंश्योर करछे. नाउ फोकस ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस रे कोन होची ना लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर. सस्टेनेबल अर्थ होची फॉर अ लॉन्ग टर्म जेमि प्रोडक्शन हो, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन है. Then how kon kari pariyo we can adopt a mixed economy of welfare. Mixed economy means both
public sector and private sector, they will participate here. So balanced approach is required where state will be involved and voluntary sectors they will be involved, including the private sector. So private sector, government by state, civil societies or NGOs, academia, जो माने अच्छे research and development रे, all of them they should be included for inclusive growth. बस समस्तंकर, as all of them they are stakeholders. We are living in a democratic country. So in a democratic country, all of them they are a stakeholder. That's why they should be included for decision making to adopt a mixed economy of welfare. To adopt a mixed economy of welfare. Here, each and every stakeholder they will participate to foster social justice to the vulnerable section of the society. Now, this is the welfare. A part time A. Now, this is all about the first topic. जो कि हमें discussion कले बुझी पारिबे समस्त भावुची आई एक्सपेक्ट समस्त बुझिले जोटी हमें डिस्कशन कले कोन ना सोशल वेलफेयर स्कीम रे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टा इंक्रीज होवा दरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टा इंक्रीज होवा दरकार एटा हमें जीएस 3 रे इकोनॉमिक्स रे भी पढ़ी परिबा बा गोटे पर्टिकुलर पोर्शन अछि देखिबे सोशल वेलफेयर स्कीम्स पेपर 2 रे मध्ये अछि सोशल जस्टिस रे मध्ये आसी परिबे सो देयर इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और हमें कहि परिबा देयर इज अ मल्टी पेपर अप्रोच जीएस 1 2 रे पढ़थिया पाठ मे भी 3 4 रे यूज हे पारे 3 4 रे पढ़थिया पाठ मे भी 1 2 रे यूज हे पारे now come to the second issue the liberty of India's freedom is under threat now ये काहे की अछि ए टॉपिक एटा काहे की एडिटोरियल आसिला व्हाट इज द रिलेवेंस काहे की आसिला बर्तन अगस्त 15 जेतेबेले गला स्वाधीनता दिवस परिप्रेक्षी रे जदि हम देखिबा गोटे प्रोग्राम लॉन्च हेतला गोटे कैंपेन लॉन्च हेतला जार ना होची हर घर तिरंगा कैंपेन नाउ एटी कोन होची व्हाट हैपेंस एक्जेक्टली इन दिस हर घर तिरंगा कैंपेन एटी देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल खदी फैब्रिक टू देखंतु पूर्वरु आमे जो खदी फैब्रिक रो जातीय पताका उत्तोलन करथले व्यवहार करथले वर्तमान केमते यूज करछे ना मशीन मेड पॉलिस्टर फ्लैग्स and बहुत समय it is also blamed that we import this machine made polyester flags from China हमें भारत रा जातीय पताका को चाइना रो इंपोर्ट करछे now this question of import export balance of payment balance of trade or forex is less and the more question is on the culture of India on the unity and integrity of the nation is on the cultural symbol of India is about the identity and pride of India is about the moral values that we have received from the India's freedom struggle. This is about the Gandhian philosophy by virtue of which we have received independence. Now, importing polyester flags from China, how far it is justiciable in the country where Khadi or the Khadi flag or Khadi industrial origin जदि हमें देखिबा इंडिया रो हितला how far it is justiciable कि भारत रो जातीय पताका को हमें इंपोर्ट करबा चाइना रो Now, ये टॉपिक हम पे काहे की इंपोर्टेंट ये टॉपिक हम पे इंपोर्टेंट दिबाई जदि हम कल्चर देखिबा इंडिया रो हिस्ट्री देखिबा ये टॉपिक हम सेटू बिलोंग करछि सो जीएस पेपर 1 नै आसुछि जीएस पेपर 1 नै आसुछि এবং यार करंट रिलेवेंस कोन या पर जीएसटी लागिबो ना नै खदी ऊपर पॉलिस्टर ऊपर जीएसटी लागुछि ना नै सो इकोनॉमिक्स अनुसार बा इकोनॉमिक एस्पेक्ट रो मध्ये हम यार रिलेवेंस देखिबा प्लस हिस्ट्री एवं कल्चर एंगल रो मध्ये हम यार रिलेवेंस देखिबा तो प्रथमे हम देखिबा सिग्निफिकेंस ऑफ खदी इन इंडियाज नेशनल आइडेंटिटी खदीर सिग्निफिकेंस कोन नेशनल आइडेंटिटी रे गांधीयन फिलोसफी जदि हम देखिबा बाय वर्च ऑफ व्हिच वी हैव रिसीव्ड इंडिपेंडेंस गांधीयन फिलोसफी लाइक अहिंसा सत्याग्रह ये सब को व्यवहार करके भारत स्वाधीनता पाइछ वर्तमान यार अनुसार देयर इज अ हाई वैल्यू ऑफ खदी खदी स्पिनिंग व्हील चरखा जा हमें कहउछ ये सब रो इंपोर्टेंस अछि तो गांधी कहउछंती कि चरखा होछि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्योर प्रैक्टिस एटा खाली it not only increases the economic stability economic health of the country rather चरखा practice करिवाटा it is a type of meditation it shows the purity ये purity को देखउची ये meditation ये spiritualism से it is connected so that it is connected to our culture that's why it is connected to our culture so a khadi is very much linked to the Gandhian philosophy it is very much linked to the mass movement जो khadi व्यवहार करा जाउतला जेतेबेले बॉयकॉट करा गला ब्रिटिश गुड्स मान को हिस्ट्री समस्त पढ़िथि तो ब्रिटिश प्रोडक्ट मान को बॉयकॉट करा गला तो स्वदेशी मूवमेंट आथिला स्वदेशी मूवमेंट रे हम इंडिया रो प्रोडक्ट मान को व्यवहार करियो लागे नाउ दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच लिंक्ड टू द मास मूवमेंट चरखा एवं नेशनल फ्लैग यार मध्ये रिलेवेंस बहुत अधिक अछि खदी सहित या चरखा वर्तमान जे डिस्कस करली चरखा को चरखा रे केमति बुना जाउछला एवं महात्मा गांधी यहाँ पर कौन कहले रिलेटेड टू चरखा की ये उद्देश्य प्योर फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस टू स्पिरिचुअलिज्म को इंक्रीज कर पारे
Now it is a symbol of our culture, like identity and pride. This is a symbol of our identity. This is a symbol of our pride. We are Indians. What are our pride? हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ुचे ये कहूचे कि इंडिया रा नेशनल हेरिटेज को हमें इंपोर्टेंस दबा प्लस इंडिया रा फ्रीडम स्ट्रगल ले यूज कराइते वैल्यूज को हमें इंपोर्टेंस दबा मोरल्स को हमें मानिबा बा ताको इंपोर्टेंस दबा ताको रेस्पेक्ट दबा तो ये कोन हमर आइडेंटिटी कोन हमर प्राइड ना भारत रा जातीय पताका ये हमर प्राइड ये हमर आइडेंटिटी खदी हमर आइडेंटिटी खदी हमर प्राइड अहिंसा सत्याग्रह बा नॉन वायलेंस ये सब होती दीज आर आवर प्राइड और दीज आर आवर फिलोसफी ये फिलोसफी हमें कोड पाई छे वी हैव रिसीव्ड इट फ्रॉम द इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ये सब हमें पाई छे नाउ इट इज अ वेरी मच सस्टेनेबल प्रैक्टिस खदी यूज करिवा एवं पॉलिस्टर यूज करिवा व्हिच इज सस्टेनेबल व्हिच इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट एंगल जदि हम देखिए खदी इज ऑलवेज बेटर देन द मशीन मेड पॉलिस्टर फ्लैग्स देन स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज इधर स्पिरिचुअल और मोरल वैल्यू देखिवा केमती इंटरलिंक हेक अछि तापर मध्ये हम एठी डिस्कस कर तापर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आसीबा एठी हम देखिबा इंडियन नेशनल फ्लैग रा हिस्ट्री ऊपर हम टिके डिस्कस करूची कि 1906 ରୁ 1921 1931 1947 पर्यंत केमती व्हाट आर द डेवलपमेंट्स व्हाट आर द चेंजेस इन द नेशनल फ्लैग so India first national flag it consisted of three horizontal stripes of red yellow and green. It is said to have been hosted on 7th of August 1906 Khadi in the Parsi Bangan Square near Lower Circular Road in Kolkata जहाँ हमें कोलकाता बोली बोलते हैं प्रथम थर पाई हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप रेड और येलो ग्रीन और स्ट्राइप 1906 मसिया रे उत्तोलन कोड करा जायतिला ना लोअर सर्कुलर रोड कोलकाता 1921 मसियार कथा जदि कहबी ये समय भारत स्वाधीनता संग्रामी पिंगली वेंकैया she met Mahatma Gandhi and he proposed a basic design of the flag जो थरे दीटा रेड और ग्रीन बैंड रहो टू रेड एंड ग्रीन बैंड्स रहो जो थरे से डिस्कस कर then 1931 में अनेक गुड़े चेंज होला पर फाइनली द ट्राई कलर फ्लैग वाज adopted 49 द कराची सेशन 1931 कराची सेशन 1931 रे नेशनल फ्लैग कांग्रेस कमिटी अडॉप्ट कले 1931 then 1947 finally the Indian flag was adopted in its present form currently हम जो इंडियन नेशनल फ्लैग को देखु छ सेम जिंस 1947 मसिया रे हम अडॉप्ट कले ना during the constituent assembly which was held on 22nd July 1947 this is the brief history of the Indian national flag तापर हम देखिए what are the laws or what are the rules which govern the tricolor flag को रूल अछि हम पकरे कोन नियम अछि हम पकरे so प्रथम नियम is related to our constitution of India constitution of India रे जदि हम देखिबा part 4a जहां को हमें फंडामेंटल ड्यूटी बोली कहउछे part 4a फंडामेंटल ड्यूटी article 51a clause a ये कहउछे it shall be duty of every citizen of India to abide by the constitution and respect its ideals institutions national flag and the national anthem ये कहउछे national flag national anthem को respect दबा होचे हमर फंडामेंटल ड्यूटी so प्रथम प्रोटेक्शन किए दोचे हमको दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन जे नेशनल फ्लैग को प्रोटेक्ट करूचंदी सेकंड प्रोटेक्शन हमको कोठी मिलुची ना द एम्ब्लेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 रे ये एक्ट आसिला ये कहउची नेशनल फ्लैग रो यूज ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगुची so you could it can be used by a government department the official seal of the president or governor the pictorial representation of the Mahatma Gandhi and prime minister and the Ashok Chakra so जोड़ा के अननेसेसरी यूज होउची तापर रेस्ट्रिक्शन लगोची पर्टिकुलर एक्ट ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आसी परिबो कि एक्ट का ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगोची देन देयर इज अ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 ये कौन कहउची ना ये कहउची यदि इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ or insult to the country's national symbol including national flag including constitution national anthem Indian map ताकि यदि कहीं इंसल्ट करूची ये ता अगेंस्ट रे स्टेप ना पे कहउची भाई ये प्रिवेंट करूची फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंसल्ट टू दिस नेशनल ऑनर बा नेशनल सिंबल्स तो ये कहउची ए एक्ट रे जदि कहीं पनिशेबल होची जदि कार प्रोसिक्यूशन होची देन से लोक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करि परिबनी एमपीएमएल इलेक्शन ने द पर्सन कैन नॉट कॉन्टेस्ट so the person who installs the national flag the person who installs the constitution of India or offense of preventing the singing of a national anthem जदि एवडा का करा जाउची ताहले 6 ईयर पर्यंत स्टेट लेजिस्लेचर बा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पई से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करि परिबो नाही
नाउ ये वाला दीज आर द रूल्स गवर्निंग द ट्राई कलर ताला हम एटी कोन कोन पढुचे ना प्रथमे खदी ऊपर देखिले इंपोर्टेंस कोन एटी खदी रो इंपोर्टेंस कोन देखिले तापरे इंडिया रो नेशनल फ्लैग रो हिस्ट्री कोन देखिले एटी देखिले रूल्स गवर्निंग द ट्राई कलर को रूल ई ट्राई कलर को गवर्न करूचे देखिले तीनटा इंपोर्टेंट लॉ बा तीनटा इंपोर्टेंट रूल ऊपर डिस्कस करी नाउ वर्तमान देखिबा कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ खदी इंडस्ट्री खदी इंडस्ट्री सिग्निफिकेंस कोन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस वर्तमान हिस्ट्री कल्चर एवं लीगल एस्पेक्ट यार देखिले वर्तमान आम यार इकोनॉमिक साइड टा देखिबा इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखिबा ये कहूची खदी होची इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूची तामाने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करूची नाउ द क्वेश्चन इज वेदर दिस सेक्टर नीड्स अ थ्रस्ट और नॉट पॉलिसी थ्रस्ट को दरकार कि नहीं द आंसर इज एब्सोल्युटली यस जे इनकम जनरेट करूची जे रूरल इकोनॉमी रो बैकबोन को स्ट्रांग करूची ता पई डेफिनेटली हमको कोन दरकार ना ता पई हमको एम्प्लॉयमेंट बस से पर्टिकुलर सेक्टर को हमको थ्रस्ट देकी इंप्रूव करिया दरकार पॉलिसी मेकिंग करिया दरकार ता then ये आउ कोन करूची खदी इंडस्ट्री ना इट प्रिजर्व्स आवर हेरिटेज ये हम हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखुची फ्यूचर रे हमरा एंशिएंट टाइम पीरियड रे हेरिटेज हम कल्चर को प्रिजर्व करके हमको देखौछ then this is eco friendly जदि हम environmental aspect देखबे as compared to the polyester made flag this is very much eco friendly then symbol of freedom struggle khadi is the symbol of freedom struggle तो ये सिंबल को हमें मानिबा दरकार एवं रेस्पेक्ट करिया दरकार सिंबल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल को हमें मानिबा दरकार एवं रेस्पेक्ट करिया दरकार सो ये चारिटा हमें देखिले सिग्निफिकेंस ऑफ खदी इंडस्ट्री नाउ लेट्स कम टू द व्हाट वी शुड डू टू प्रमोट खदी इंडस्ट्री व्हाट इज द वे फॉरवर्ड व्हाट आर द सॉल्यूशंस इट सॉल्यूशन कोन वे फॉरवर्ड कोन ना खदी इंडस्ट्री को डेवलप करिया पे हमको दरकार गवर्नमेंट स्कीम द्वारा हम इंडस्ट्री को डेवलप करि परियो देन ग्लोबल प्रमोशन एंड फेयर ग्लोबल प्रमोशन ऑफ फेयर जदि कोन से अंतर्जातिक मेला होची बा जातीय स्तर रो मेला होची हम एटी खदी को डेवलप करि परियो खदी को प्रमोट करि परियो सेटी खदी वस्त्र खदी रो केयर डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट को हम प्रमोट करि परियो बात को हम बिक्री करि परियो देन स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इन दिस सेक्टर खदी को केमती बेटर यूज करा दे परियो केमता को एक्सपोर्ट करा दे परियो बा तार क्वालिटी इंप्रूव करी नेशनल लेवल ले केमती यूटिलाइज करा दे परियो अधिक रु अधिक सिंथेटिक बा पॉलिस्टर को यूज न करी खदी रो व्यवहार केमती करा दे परियो से रिलेटेड ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करला दरकार ग्लोबल प्रमोशन आर मध्ये करवा दरकार स्किल डेवलपमेंट करवा दरकार नाउ जीएसटी एग्जेम्पशन फॉर खदी एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स जोटा जीएसटी लागी कि तार प्राइस टा इंक्रीज कर दोउची ये कुछ से प्राइस टा को हम डिक्रीज करवा दरकार केमती ना जीएसटी एग्जेम्पशन होवा दरकार जीएसटी एग्जेम्पशन होवा दरकार ए पर्टिकुलर व्हिच इज अ हेरिटेज व्हिच इज इको फ्रेंडली व्हिच इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ता ऊपर ये कुछ जीएसटी हटि जवा दरकार सो दैट इट्स प्राइस विल बी ऑटोमेटिकली डिक्रीज्ड तर नेक्स्ट पॉइंट को जिबा हमें ये गला सिग्निफिकेंस खदी इंडस्ट्री रो सिग्निफिकेंस ऊपर हमें डिस्कशन कले नेक्स्ट पॉइंट को आसबा नेक्स्ट टॉपिक आसबा बांग्लादेश इश्यू ऑन इंडिया इंपैक्ट ऑफ बांग्लादेश इश्यू ऑन इंडिया बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोली कहा जाय पूर्वरु इंडिया पाकिस्तान एवं बांग्लादेश मिसी की गोटे कंट्री थी लेटर ऑन इंडिया भारत पाकिस्तान अलग आइ गले पाकिस्तान रो दुईटा पार्ट रहला गोटेला ईस्ट पाकिस्तान और गोटेला वेस्ट पाकिस्तान बर्तमान ये लाके ना बांग्लादेश ला ईस्ट पाकिस्तान और लेटर ऑन बांग्लादेश लिबरेशन वार हला परे ये गोटे नुवा कंट्री रे परिणत होइछ बांग्लादेश वार ऑफ लिबरेशन हला परे बांग्लादेश गोटे सेपरेट और नुवा कंट्री फॉर्मेशन होइछ ना बांग्लादेश से बर्तमान जो क्राइसिस चली छी जो स्टूडेंट माने गोटे आंदोलन करूथिले स्ट्राइक करूथिले कोटा हटेवा पे बा रिजर्वेशन को नहीं की जो स्ट्राइक है लेटर ऑन दैट चेंज द पॉलिटिकल फेट ऑफ बांग्लादेश ये कंप्लीटली बांग्लादेश रो भविष्य को नष्ट कर देला नाउ ये यार इंपैक्ट कोन इंडिया ऊपर इंपैक्ट कोन हमें इंटरनल अफेयर को अधिक बांग्लादेश न जाय कि हम पे इंपोर्टेंट होची कि बांग्लादेश रे वर्तमान चलीथिबा इस्रो इंपैक्ट इंडिया ऊपर कोन पड़े तो वर्तमान प्रथमे देखिबा इंडिया रो होची वन ऑफ द बेस्ट अलाय होची ग्लोबल फोरम रे बांग्लादेश इंडिया रो वन ऑफ द बेस्ट अलाय होची बांग्लादेश ता माने कोन ना से टेररिज्म अगेंस्ट लड़िवार हो बा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पई वॉइस रेज करिवार हो बा इंटरनेशनल ट्रेड रे वॉइस रेज करिवार हो बांग्लादेश ऑलवेज सपोर्ट इंडिया वॉइस इंडिया जो पॉइंट रेज करे बांग्लादेश ताको सपोर्ट करियास ता माने इंडिया रे गोटे स्ट्रेंथ इंटरनेशनल फोरम रे जदी कोन प्रकार डिस्प्यूट होची कॉन्फ्लिक्ट होची एंड इंडिया रेजेस इट्स वॉइस then there are certain countries which are supporting India and Bangladesh is one of them or the leading one Bangladesh is pratyek jagah India support provide kare now Bangladesh is the crisis is automatically it is like a crisis to India it is like a crisis to India now second point jodi hame dekhiba
दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट ट्रेड पार्टनर बांग्लादेश हूँ इंडिया गोटे बहुत बड़ ट्रेड पार्टनर बहुत अधिक प्रोडक्ट आम एक्सपोर्ट करुचे कौटी ना बांग्लादेश मेजर प्रोडक्ट को आम एक्सपोर्ट करुचे कौटी ना बांग्लादेश जदि आम इंडियन वेजिटेबल्स फ्रूट्स देखिए मोस्टली एक्सपोर्टेड टू बांग्लादेश मैक्सिमम ग्रेप्स एक्सपोर्ट आम करुचे बांग्लादेश मैंगो एक्सपोर्ट करुचे आम बांग्लादेश now trade रे मध्ये हमको लॉस है now there is a criticism from the western countries as well काहे की western country को now western countries like USA सेमाने बांग्लादेश को blame कर सकते कि बांग्लादेश में there is a continuous human rights violation by the Sheikh Hasina government now and India supports it एवं India ताको support करूची so continuous human rights violation for humanitarian crisis in Bangladesh which is being कौन सेटा को बेसी रेज क्वेश्चन को माने ना इट इज बीइंग रेज्ड बाय द वेस्टर्न कंट्री स्पेसिफिकली यूएस रेज करूची कि बांग्लादेश रे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होची बोल हैला नेक्स्ट होची कोन ना एंटी इंडियन सेंटीमेंट अमंग द बांग्लादेशी पीपल बांग्लादेशी लोक मानकर एंटी इंडियन सेंटीमेंट काहे कि ना दे कंसीडर देयर प्राइम मिनिस्टर इज अ गुड एलाय ऑफ इंडिया सेति पय समानकर एंटी इंडियन फीलिंग्स आछि एंटी इंडियन फीलिंग्स इज देयर देन सिक्योरिटी इशू मोस्ट इंपोर्टेंट जदि हम देखिबा इंडिया बांग्लादेश रो बॉर्डर इज मोर देन 4000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर सो इंडो बांग्लादेश दिस इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया रो लॉन्गेस्ट बॉर्डर किए ना इंडिया रो लॉन्गेस्ट बॉर्डर होच कि ना इंडो बांग्लादेश बुझी पाले समझते सो एठी हम देखछि कोन एटी सिक्योरिटी इशू कोन इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को किए गाइड करूछि दिस इज बाय द बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मेंस पय तो इंटरनल सिक्योरिटी पढे सेठी डिस्कस करियो सिक्योरिटी फोर्स एंड देयर मैंडेट्स सो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये गाइड करूछि का पर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को का करूछि ना इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को दिस द मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर इट इज सो सिक्योरिटी इश्यूज मध्ये एटी क्रिएट होछि कोन होछि एटी ना सिक्योरिटी इश्यूज एटी क्रिएट होछि ना पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया एटी माइग्रेट करिया पछरे कारण कोन ना देयर इज अ पुश फैक्टर एंड अ पुल फैक्टर इंडिया पुल करूछि एज अ कंट्री हैविंग हायर जीडीपी और हायर पर कैपिटा इनकम और गुड नेशनल रिसोर्स एज कंपेयर टू बांग्लादेश बांग्लादेश अपेक्षा इंडिया रे रिसोर्स अधिक so that's why Bangladeshi people they believe that if they migrate to India then automatically they will have a better standard of living that's why they're migrating second point is the persecution religious persecution जहाँ हम अत्याचार को तापाई मध्ये लोक माने एटु माइग्रेट कर जाउछ पॉवर्टी बा हम जदि देखिबा हंगर malnutrition unemployment ये सब रे instances maximum in Bangladesh that's why people are migrating to India to get a good job to get better access to healthcare facility to get better access to education ये सब पई से माने इंडिया को आसुती नाउ व्हाट इज द सिक्योरिटी इशू एसोसिएटेड हियर सिक्योरिटी इशू एटी कोन एसोसिएटेड हे रहछि ना प्रथम सिक्योरिटी इशू होछि जो बांग्लादेशी माइग्रेंट माने बा रिफ्यूजी माने इंडिया को आसुचंती they don't have any type of patriotic feelings towards India सेमानकर भारत प्रति कोन देशात्मबोधक प्रेम नाही सेमाने आसुचंती तांको लाइफ सिक्योर करिया पई तांको पर्सनल एजेंडा बा पर्सनल गेन पई सेमाने आसुचंती सो दे मे बी मिसयूज्ड दे मे बी मिसगाइडेड सेमाने स्लीपर सेल हिसाब रे काम करि पारंती बा सेमाने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रे काम करि पारंती सेमाने सहित मिस पारंती मिलिटेंट आउटफिट मानक सहित मिस पारंती इंटरनेशनल माफिया मानक सहित मिस के ड्रग्स ट्रैफिकिंग ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग prostitution sleeper cell terrorism activity arms and ammunition trafficking drugs trafficking ये सब करि पारन now this is the most important security threat for India most important security threat for India जे internal security एवं external security issue create करिवो इंडिया पे आगो भविष्य then migration related issues रे कोन हुई माइग्रेशन में कोन हुई ना as people are migrating from Bangladesh to India जेहेतु तुम माइग्रेट कर बांग्लादेश टू इंडिया को इंडिया रे पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी टा रिड्यूस हो पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी एट कोन ना कमी जाउ रिसोर्स कम हे जाउ रिसोर्स कोन यूज कोन करिया यदि पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी कमी जाए तब ऑटोमेटिकली इंडिया रे तो पॉपुलेशन प्रेशर इज मोर अधिक पॉपुलेशन प्रेशर अछि ना जेति की रिसोर्स अछि हम बकरा हम सेटा को यूटिलाइज करि पारबा पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज लो नाउ पीपल कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश population increasing resource availability is decreasing and hence resource availability is decreasing so ye kon create करते it creates migration related issue now there is a china factor कोन ना चाइना एटी इंटरफेयर करिया पई चाहूची एशियन कंट्री मानक भितरे चाइना आज अ सुपर पावर डोमिनेट करिया को चाहूची स्पेसिफिकली इंडिया को कंटेन करिया पई चाहूची so in each and every step जोटी इंडिया इज अ स्टेक होल्डर बा इंडिया को कोन प्रकार बेनिफिट मिलुची बा भविष्य रे मिलिबो चाइना एटी इंटरफेयर करिया चाहूची प्रत्येक जगह चाइना कोन करूची ना प्रत्येक जगह इंटरफेयर करिया पई चाहू चाइना फैक्टर मध्ये इट इंपोर्टेंट इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स सो दीज आर द इंपैक्ट
तो जदि हम देखिबा यूएन सीटीएडी अनुसार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जदि हम देखिबा इंडिया रो चाइना को केते ना 13.5 यूएस डॉलर बिलियन यूएस बिलियन डॉलर 13.5. So India is among the top 20 capital exporting countries. So जदि हम एटी लीगल प्रोटेक्शन न मिले को मानकु ना इंडियन कंपनी मानकु जो माने बांग्लादेश रे इन्वेस्टमेंट करछन्ती ऑटोमेटिकली देयर विल लॉस टू द इंडियन कंपनीज और इंडियन इन्वेस्टर. तो एमान को प्रोटेक्ट करिया पई एटी इंडिया रे इंटरफेरेंस आवश्यकता अछि. या व्यतीत जदि हम देखिबा हमें कहूजे कि इंडिया वर्तमान गोटे विश्व गुरु होबा को जाउछि. सो जेहेतु हम विश्व गुरु होबा को जाउछे एवं विश्व गुरु जतल होबा को जाउछे हम नेबरिंग कंट्री जोटा हम नेबरिंग कंट्री अछि सेठी पीस प्रॉस्पेरिटी सोशल जस्टिस इंश्योर करिया मध्ये हमर दायित्व. Specifically the countries like Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, जो मानक सहित इंडिया हैज अ वेरी गुड कोलैबोरेशन बा इंडिया हैज अ एज ओल्ड टाई जो मानक सहित इंडिया एज ओल्ड टाई अछि बा कल्चरल रिलेशनशिप अछि बा इकोनॉमिक रिलेशनशिप अछि सेठी इंडिया से प्रोटेक्शन करबार आवश्यकता रहै छै. Now this is the way forward. ये टॉपिक बर्तमान एमते कंटिन्यू होबो ये या पर इश्यूज आसीबो एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन. इंडो बांग्लादेश ऊपर हम आगो मध्ये डिस्कशन करबा जेंति नुवा नुवा आइछ. Now come to the next topic, topic 4 on quota for locals, local मानको पाई quota. Now प्रथम कथा होइला constitutional ना नहीं, constitutional ना नहीं, local लोक मानको पाई quota दो. But the place of birth like a term समस्त पढ़िथिबे जेतेबेले article 15 16 of the constitution पढ़ुते fundamental right पढ़ुते. So it is problem कोन बा migration काहे की होछ. Migration देखिबा जे हम इंडिया रे there is a imbalance, regional imbalance. कौन देखिବାକୁ मिलुଛି हमको इंडिया रे ना देयर इज रीजनल imbalance. केमती ना some regions they are developed, other regions they are underdeveloped. जोड़ा underdeveloped सेठू लोक माइग्रेट करछन कोठी कि ना डेवलप्ड रीजन. तो डेवलप्ड रीजन लोकन को लागुଛି कि हमर रिसोर्स ता भाग होई जाउछ अन्य माने एस्थेटिक भाग करछन. मुंबई रे मध्ये सेम टाइप रो कंडीशन सृष्टि हेतिला जोटी मझिर आसिला कि महाराष्ट्र फॉर मराठा एवं जो माने बिहार यूपी एवं साउथ इंडिया रो जाय कि लोक काम करउतले कोडी मुंबई रे बा महाराष्ट्र से मान ऊपर आक्रमण हला कम्युनल वायलेंस हमको देखिया पे मिलला व्हिच इज द क्वेश्चन ऑन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. व्हिच इज द क्वेश्चन ऑन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. सो रीजनल इंबैलेंस इति हम देखुचे क्रिएट होची कोडी ना डेवलप्ड एवं अंडर डेवलप्ड रीजन मान को भितर. सो दैट्स व्हाई पीपल आर माइग्रेटिंग टू गेट अ जॉब पाई माइग्रेट करछन. ना जेहेतु इंडिया रे जॉब अपॉर्चुनिटी लेस जदी से मान को मते जदी मोर रीजन रे जॉब मिलिबो then what is the requirement of migrating to a new area new region कहीं जण माइग्रेट करी. so job opportunity हमको कम देखिया पई मिलुची most important point. so per capita income बढ़िया पई माने जर इनकम जनरेट करिया पई गोटे लोको ता निज रीजन छाडी के आ गोटे रीजन को माइग्रेट करूची. then there is economic pressure and exploitation. economic pressure and exploitation को मानकर जो माने लोकल नुहंती से मानकर अधिक इकोनॉमिक प्रेशर एक्सप्लॉइटेशन because they don't know the local language. तांको लोकल लैंग्वेज जाना नहीं मानेकर बिहार यूपी रो गोटे लोक ओडिसा रो गोटे लोक जाई कि महाराष्ट्र रे काम करूची बा तेलंगाना रे काम करूची बा कर्नाटक रे काम करूची तमिलनाडु रे काम करूची. सो से माने सेठी कोन एसोसिएशन फॉर्मेशन करि परिबे तांको लोकल स्ट्रेंथ नहीं. एसोसिएशन फॉर्मेशन करि कि मैनेजमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट अगेंस्ट दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस. so there is more exploitation or more pressure. so there is a more risk and vulnerable. they are more vulnerable निज रीजन नु बाहर अछन. सो सेमान को प्रति कोन से सोशल सिक्योरिटी नहीं बा कोन प्रकार लेबर राइट्स मान को मिली परनी जहां जहां लेबर राइट मिली रहा था. लेबर लॉ इंडिया रे तो बहुत अछि बट दैट एक्जिस्ट ओनली इन पेन एंड पेपर नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. प्रैक्टिकली आर के अप्लाई करा जाउनी. सो लेबर राइट्स आर वायोलेटेड इन इंडिया. देन रीजनलाइजेशन हमर रीजन एटा ईस्ट सेटा वेस्ट सेटा साउथ सेटा नॉर्थ it creates regionalization which is against unity and integrity of the country. This is completely against unity and integrity of the country. then is contrast with local workers. so it is local और migrant मान को भीतर कौन होबो and there is a clash between local and migrants. so a class ता internal class जैसे अधिक होई low rate of economic development देखिया जदि मु स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहबी तति अनेक गुडे कल्चरल कम्युनिटी अछि जो मान को भीतर कॉन्फ्लिक्ट देखिया पे जो मान को भीतर कंटीन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट देखिया पे मिले. सो कंटीन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट देखा गला ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कमी जिवो देयर विल लो जीडीपी कोन होबो ना लो जीडीपी जिवो हैला. सो माइग्रेंट जदि हम देखिया लोकल और माइग्रेंट मान को भीतर क्लास इट लीड्स टू रिडक्शन इन जीडीपी. कोन कहली रिडक्शन इन जीडीपी बुझी पाले.
नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा हमें नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा हमें migrant worker मान what are the issues that the migrant workers facing what are the issues that the migrant workers are facing प्रथम हैला इकोनॉमिक instability काहे कि ना मान को प्रॉपर समय रे मान को जहा सैलरी मिलु प्रॉपर सैलरी जहा जो समय रे मिलवा कथा सेटा मिलु नाही देन देयर इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन कोन होची ना से मान को ओवर एक्सप्लॉयटेशन होची there is a limited access to fair employment condition there is limited access to fair employment condition ए जो क्वेश्चन टा हमें बर्तन डिस्कशन करछे ना एटा कोन पय आसला जानि जल्दी ये क्वेश्चन आसला बिकॉज ऑफ गिग वर्कर्स ए गिग वर्कर्स कोन ना गोटे कोड अछि जे कोजे कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी कोन को आजे ना कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी केबे आसले ना 2020 ये कुछ gig worker किए ना is the person who performs work or participates in a gig work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer-employee relationship. जने तो जॉब करे तो employer-employee relationship exist करे. Employer जे काम दबो, employee जे काम करे. ताके भीतर गोटे relationship सेठी exist करूची. But ये कहूची fixed employer-employee नाहती. ये जोटी freelancing type of work. ये को जोटी काम मिलिबो से सेठू काम करिवो इनकम करिया पे. So gig economy कोन नहीं कुछ गोटे free market system जोटा temporary positions are created workers are independent है short term engagement परिथान जेति की contractual type of work जेति दिन काम अछि सेति दिन करिवे काम बंद हे गेल ऑटोमेटिकली दैट विल बी स्टॉप से मानकर काम बंद हे सो 2022 रे नीति आयोग गोटे रिपोर्ट देले कि इंडिया रे 23.5 मिलियन गिग वर्कर हेबे बाय 2029-30 तामाने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय मानकर नंबर बढ़ुची as compared to full time employees contractual employee मानकर नंबर इंक्रीज होची as compared to full time employees है ये वाला 88 पॉइंट मन रखिए गिग वर्कर्स कोन व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स देन एटा देखिबे रीजनल इंबैलेंस केमति क्रिएट होची और व्हाई कोटा फॉर लोकल इज अ थ्रेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेक्स्ट इश्यू को हमें आसेबा अ ग्राउंड प्लान फॉर सस्टेनेबल मास एम्प्लॉयमेंट अ ग्राउंड प्लान फॉर सस्टेनेबल मास एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये so India रे जदि हम देखिबे there are low wage and short term skill programs so short term skill program एवं low wage it is a threat to the long term sustainability long term रे sustainable employment facility हमको मिली पर जोटी गोटे लोक कंटीन्यूअसली दीर्घ दिन धरि काम करि परिबो एवं there will be security economic security रहइबो social security रहइबो social एवं economic security रहइबो so it is a low wage way जेतर salary कम हुए automatically that will lead to economic insecurity it will lead to economic insecurity so low wages they create economic insecurity for workers it makes it difficult for them to meet basic needs जो मान वर्कर समान तकर बेसिक नीड मिल परिबन फूड शेल्टर खाद्य वस्त्र वासक so जदि हम कहबे गारमेंट इंडस्ट्री रे there is a 48.5% gap between minimum wages and living wages minimum wage एवं living wage जति कि minimum wage रहिबा कथा एवं एक्चुअली जति कि टंका से माने पाउछथि आज वैसे ता भीतर केते गैप ना 48.5% गैप देन देयर इज शॉर्ट टर्म एतो बुझ पाले तो ये लो वेज बहुत कम टका मिलछि मिनिमम वेज रु भी कम मिनिमम ता होछि ता ऊपर को ही करियो बट मिनिमम ता सिक्योर करिया पय जाय होछि बट मिनिमम रु भी एटी कम मिलछि तो नेक्स्ट है कुछ शॉर्ट टर्म स्किल प्रोग्राम्स जो गुडा का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं शॉर्ट टर्म प्रोग्राम ये कुछ इट फेल टू एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी ये एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी बढ़ौछि पढ़ै पारु इट फेल्स टू एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी so many short term skill programs they do not provide the depth of training needed for long term employability जो स्किल दरकार से स्किल को हमें एक्वायर करनी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयबिलिटी को एक्वायर ना करके शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयबिलिटी और शॉर्ट टर्म स्किल को हमें एक्वायर करछे सो जे हमें देखिबा 75% of technical graduates 90% of other graduates they are considered unemployable कौन भाई ना they don't have any type of practical skill एमान को पाखरे कोनसी practical skill नाही बुझियो देन आउ कोन ना there is stagnation of workforce productivity मध्ये डिक्रीज करछि बा जदि हम कहबे it is almost zero बा डिक्रीज करि so workers they are paid low wages there is a little incentive for them to enhance their skill or productivity
जेहेतु से दरमा बा वेज कम मिलुची तांको पाखरे अपॉर्चुनिटी मध्ये कम से स्किल एक्वायर करिया पई बा निज भितर डेवलप करिया पई ह्यूमन रिसोर्स जिते डेवलप हो जिते स्किल एक्वायर करिवो सेही अनुसार तार इनकम टा बढ़ियो मन कर मु कहली टेक्नोलॉजी रो यूज वर्तमान एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोंतु चैट जीपीटी कोंतु ये सब रो इंपोर्टेंस बढ़िलान जो मान को पाखरे के स्किल थिबो एआई रो स्किल थिबो मशीन लर्निंग रो स्किल थिबो एल्गोरिथम स्किल थिबो डाटा प्रोटेक्शन रिलेटेड स्किल थिबो से माने इजीली जॉब पाइबे एमती नहीं जॉब क्रिएट होनी जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड बट देयर इज अ गैप बिटवीन द रिक्वायरमेंट स्किल रिक्वायर्ड एंड स्किल एक्वायर्ड स्किल जति के रिक्वायरमेंट अछि बाय द कंपनी एवं स्किल जति के एक्वायर करछि कि ना बाय द एम्प्लॉय then there is a lack of investment in long term skill development investment nahi we have different schemes like Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana यार implementation मगर ठीक है only exists in pen and paper practical application यार हो so low wages it often correlates with the limited investment in the employee training and development so it is evident in the fact that only 15% of those trained under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana they found job only 15% what about the rest 85% job so it shows short term training initiatives they are not effectively translating into sustainable employment outcomes short term employment generation skill scheme ta hame nahi aste employment generation kariya pai hame skill development program nahi aste but what is the outcome हमको outcome केते मिलुची हमको benefit केते मिलुची ना no benefit no outcome so there is a perpetuation of poverty and inequality there is a perpetuation of poverty and inequality so the combination of low wages and inadequate skill development it contributes to perpetuation of poverty and inequality poverty and inequality देखिए मिलुची there is a 42% of global workforce in vulnerable employment global workforce of 42% भाई पड़ते approximately half of the total workforce they are in the vulnerable section semanakar labor rights violated semanakar pakare social security scheme nahi semane को हेल्थ केयर एजुकेशन को एक्सेस नहीं सेमानकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं बा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं सेमानक जॉब मिलिबो चाकरी मिलिबो सब बेले सो आको रिजॉल्व करिया पई देयर इज अ 12 पॉइंट इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल मास एम्प्लॉयमेंट पई गोटे 12 पॉइंट इनिशिएटिव करा जायछि कोन कोन प्रथम वाला आइडेंटिफाई द स्किल नीड को स्किल रिक्वायरमेंट अछि जेंति मु कहली कि एम्प्लॉयमेंट र आवश्यकता तो अछि बहुत प्रत्येक समय देखिए लिंक्डइन को जानतु बा कोनोसी प्लेटफॉर्म को जानतु जोटी जॉब अपॉर्चुनिटीज वैकेंसी गुडा का आसुची देखिए कि अनेक गुडे स्किल र आवश्यकता अछि that is the skill needed that is the skill required then what is the skill acquired properly exactly by the employee पाखरे से स्किल अछि ना नहीं जदि हम देखिए मेनी टाइम्स वी फाइंडिंग दैट एम्प्लॉय पाखरे स्किल नाही जो स्किल र आवश्यकता अछि से स्किल एम्प्लॉय पाखरे मिलु सो आइडेंटिफाई करबा को हम गटी कोन करूची ना द स्किल नीड एंड द स्किल एक्वायर्ड जहाँ स्किल दरकार से स्किल हम पाखरे अछि ना नहीं स्किल को प्रथम डेवलप करिया दरकार प्रथम आइडेंटिफाई करिया दरकार तापर ताको डेवलप करिया देन इज इनिशिएटिव एट द लोकल लेवल नाउ दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन हम कोन देखुचे ना लोकल लेवल ले हम कोन देखुचे ना लोकल लेवल ले इनिशिएटिव नउचा कोन पई ना इनिशिएटिव एट द लोकल लेवल टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट बढ़िया पई सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट बढ़िया पई so local level is one initiative that is related to use of natural resource that is related to use of agriculture sector को हम डेवलप करि परिबा ओके नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को हम डेवलप करि परिबा एटी रूरल डेवलपमेंट को हम एटी डेवलप करि परिबा देन वी कैन हैव वोकेशनल प्रोग्राम रे एटी कोन होती ना स्किल डेवलपमेंट होची देयर इज स्किल डेवलपमेंट हैला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन ना एटी स्किल डेवलप करूचे को मानकर स्किल डेवलप करूचे ना जो मान को स्किल रिक्वायरमेंट है जो मान को एम्प्लॉयमेंट रा आवश्यकता है सेमानको पई हम एटी कोन वोकेशनल प्रोग्राम देन हेल्थ केयर एट द इंटरनेशनल बेंचमार्क हेल्थ केयर जेते बेटर मिलियो मु कहली जेते बेटर हेल्थ केयर मिलियो गोटे प्रोडक्शन सेते अधिक हो लोक सेते प्रोडक्शन अधिक करिवो एंड मोर कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी को कंट्रीब्यूशन ना मध्यम बढ़िवो हेल्थ केयर बढ़िला तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़िवो ऑटोमेटिकली हां कि नहीं so because more healthy more production more contribution to the gdp then women security पर हम काहे के डिस्कशन करते ना security is the cause of concern for which there is a low female labor force participation rate in india female labor तर पार्टिसिपेट करूची तर पार्टिसिपेशन रेट डिक्रीज होउची कोन पई डिक्रीज होउची why decrease in the female participation rate ना because women security नहीं on the field जो से काम करियो से सिक्योरिटी मिलो सो ऑटोमेटिकली काम करिया पई प्रस्तुत है there is investment in the skill development कोडी हम दरकार
more investment is required कोटी ना more investment required in the skill development sector. Skill develop कले like different schemes in the दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना या थोड़े skill develop कले ही हमको easily job मिल पाए. Skill develop कले ही एटी easily a better job को accessibility मिल पाए. There is apprenticeship program in industry. एटा होची industry रे collaboration बढ़ाउछ हम एटी कोन कहूचे ना industry रे हम एटी collaboration बढ़ाउछ. So apprenticeship हिसाब रे काम कले intern हिसाब रे काम कले they will get more knowledge, they will be exposed to the practical application, then they will be getting a job. सेमान को easily तापर job मिल पाए. There is absorption of youth at the workforce. Absorption youth at the workforce. एटा हेले कोन हो ना youth बढ़िले their contribution will be more to the GDP. Production अधिक होबो, GDP अधिक होबो, per capita income टा बढ़ी जिवो. But total production, total GDP टी increase करियो. सेति पय ये कहूचे absorption of youth at the workforce. Absorption of youth at the workforce. Then is capital loan for women. Capital loan ये gender specific loan. Women empowerment करिया पय हेले capital facility मान पकड़बा credit facility available हो दरकार. Credit facility by the capital मान पकड़ available हो दरकार. There is skill accreditation program. कौन कहिनी ना स्किल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम स्किल बढ़िया दरकार स्किल न बढ़िले लोक काम कोड करियो ऑलरेडी डिस्कस करी स्किल आइडेंटिफाई कर एवं स्किल को एक्वायर कर कार ना जो माने ऑप्शन हमर लेबर फोर्स देन मेजॉरिटी ऑफ फंड इन द वाटर स्कैर्स ब्लॉक जोडा वाटर स्कैर्स ब्लॉक रहिले सेठी का अधिक फंड जो व्हाई मोर फंड बिकॉज़ हमें ऑलरेडी डिस्कशन कले कि मोर इन्वेस्टमेंट इन द और डिसेंट्रलाइजेशन मींस एट द लोकल लेवल मींस एग्रीकल्चर का फोकस करछे focusing on the agriculture and allied agriculture. So agriculture एवं allied agriculture को promote करिया पाई हेले हमको कोन करिया पड़िबो ना वाटर स्कैर्स ब्लॉक मानकर अधिक इन्वेस्टमेंट करिया पाई पड़िबो मोर इन्वेस्टमेंट इन द वाटर स्कैर्स ब्लॉक देन आउ कोन करि परिबा ना हमें कहि परिबा स्टार्टअप स्किल्स इन हाई स्कूल स्टार्टअप स्किल हमें बढ़ेगा हाई स्कूल पाठरु ही ये को स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर टा बढ़ा इंडिया रे प्रत्येक जगह रे एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इज नॉट प्रेजेंट किछि रीजन मु कहि Gujarat entrepreneurship is very much available. People are interested for entrepreneurship. But Gujarat व्यतीत rest of the region जदि हमें देखिबा एटी entrepreneurship को फोकस करनथि समस्त गवर्नमेंट जॉब पछरे ही दौड़थि. So entrepreneurship skill बढ़िया पई ये कहूची कोन करिया दरकार ना हाई स्कूल लेवल रो ही फ्रॉम हाई स्कूल रो ही ये कहूची स्टार्टअप गुडा को इंक्रीज करा बा स्टार्टअप स्किल गुडा को पढ़ा. बुझिला सो दिस इज द 12 पॉइंट पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल मास एम्प्लॉयमेंट. तो जदि कौन सी प्रकार क्वेश्चन आसुची रिलेटेड टू जॉबलेस ग्रोथ बा क्वेश्चन आसुची ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयबिलिटी जदि कौन सी क्वेश्चन आसुची ऑन सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ताहाले ये 12 टा जाक प्रोग्राम को एटी डिस्कस करियो 12 पॉइंट प्रोग्राम यार सॉल्यूशन कोन है जो 12 पॉइंट प्रोग्राम ऊपर हम डिस्कस करले दिस इज द सॉल्यूशन 12 पॉइंट प्रोग्राम इज द सॉल्यूशन नाउ समस्त ये 12 टा पॉइंट को जहां जहां डिस्कस करी ताको एलाबोरेट करके लिखियो मेक अ नोट ऑफ इट एवं ताको यूटिलाइज करू तो एटी जो पॉइंट अछि ताको मते यूटिलाइज करि पारे. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑन द एसेंस ऑफ इंडिया's इन्फ्लेशन प्रॉब्लम. अगेन इन्फ्लेशन ऊपर एटी अछि इन्फ्लेशन कोन इन्फ्लेशन कहला होचे persistent rise in price persistently प्राइस का राइज करियो को हम इन्फ्लेशन बोली कहउचे. जनरली ये हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन को ए हिसाब रे मेजर करा जाय. हेडलाइन कोन इट refers to the change in value of all goods in the basket providing a broad measures of inflation within an economy. So most of the goods broad goods को लेके देखा जाए कि से goods मानकर प्राइस है केते चेंज ही जाय. देन इज द कोर इन्फ्लेशन हम कोन देखुचे ना कोर इन्फ्लेशन हम देखुचे कि इट एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल आइटम्स. ये कौन एक्सक्लूड कर दोची ना ये एक्सक्लूड करछ फूड और फ्यूल आइटम को फ्रॉम द हेडलाइन इन्फ्लेशन टू रिड्यूस वोलेटिलिटी फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन टू रिड्यूस वोलेटिलिटी काहे कि ना प्रत्येक वर्ष जे हम देखिया फूड रे इन्फ्लेशन इज समवट अराउंड 10% मिनिमम. सो long term रे जदि हम देखिबा फूड और फ्यूल प्राइस दैट फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली. सो इन डेवलप्ड इकोनॉमीज फूड एंड फ्यूल अकाउंट्स फॉर 10 to 15% ऑफ हाउसहोल्ड कंजम्पशन. हम टोटल कंजम्पशन 10 to 15% होची फूड और फ्यूल ऊपर. डेवलपिंग इकोनॉमीज
এটা डेवलप्ड इकोनॉमी कथा कहले डेवलप्ड इकोनॉमी इट इज 10 to 15%। नाउ डेवलपिंग इकोनॉमी जदि हम देखिबा ताहले एटी कोन होउची ना टोटल रो 30 ରୁ 40% होउची डेवलपिंग इकोनॉमी खर्च कर कहा पर ना फूड और फ्यूल ऊपर 30 ରୁ 40 देखो केते अधिक खर्च होउची। सो हेडलाइन इन्फ्लेशन टा इट इज मोर रिलेवेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। हेडलाइन इन्फ्लेशन टा डेवलपिंग कंट्री मानको पई बहुत रिलेवेंट कहीं जेहेतु हमर खर्चटा अधिक से प्रोडक्ट गुडा ऊपर अछि। सो जदि हम इन्फ्लेशन टार्गेटिंग देखिबा इन्फ्लेशन को हम केमती टार्गेट करथिबा प्राइस राइज टाको इंडिया रे केमती चेक करा दोछि केमती को कम करा दोछि नै कुछ इन्फ्लेशन टार्गेटिंग बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कि आनंती ना मॉनेटरी पॉलिसी आसे बाय आरबीआई देखिबे जेमती सीआरआर एसएलआर रेपो रिवर्स रेपो या ऊपर हमें डिस्कशन करथिले जोटी आरबीआई ट्राइज टू डिफाइन व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट रे केते क्वांटिटी रो मनी रहबो दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ इन मॉनेटरी पॉलिसी और थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज डन इन इंडिया। It involves the central bank using interest rate to steer price increases towards a publicly announced target। जहां टारगेट आरबीआई डिसाइड करथांती सेही अनुसार इन्फ्लेशन टाको डिक्रीज करा जाय इन्फ्लेशन टाको चेक करा जाय। So India inflation targeting framework this is managed by RBI and it aims for a 4% inflation rate with a tolerance band of +2 to -2%। 4% पाखापाखी इन्फ्लेशन रेट रखा पई कहूची। सो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करिया पई आरबीआई पाखरे कोन अछि ना मॉनेटरी पॉलिसी लाइक रेपो रिवर्स रेपो सीआरआर एसएलआर इज। सो राइजिंग द रेपो रेट हेल्प्स रिड्यूस इन्फ्लेशन बाय कर्बिंग स्पेंडिंग केमती नाइट हम डिस्कशन करथिले रेपो रे कोन हुए रिवर्स रेपो रे कोन हुए इकोनॉमिक्स पढिला बेले तो आरबीआई बरो करचंती बैंक पाखरु से रेट ऑफ इंटरेस्ट पढिले कोन हो बैंक जेतले बरो करची फ्रॉम आरबीआई सेठी इंटरेस्ट रेट पढि गले कोन हो पब्लिक पाखरे मनीटा इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो ये सब पॉइंट गुडा को इकोनॉमिक्स रो रिस्पेक्टिव क्लास रे डिस्कस हेछि। नाउ एठी हम देखले इन्फ्लेशन टारगेट जोटा इंडिया रे करा जाउची सेठी हम एक्सक्लूड कर दोते कहापना फूड प्राइस को ये फूड और फ्यूल प्राइस ता इंडिया रे केते हम देखले ना 30 ରୁ 40% इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया फूड और फ्यूल बर्तन हम इन्फ्लेशन टारगेट कला बेले फूड और फ्यूल टा को एठी एक्सक्लूड कर दोछे काहे की बार बार इंपैक्ट कोन पडियो ना इंपैक्ट पडियो फूड प्राइस ता शार्पली राइज करछि इंडिया रे नियरली 10% ईयर ऑन ईयर प्रत्येक वर्ष जदि हम देखिबा 10% इंक्रीज हो जाउछ फूड प्राइस। So 2019 रे जदि हम देखिबा फूड प्राइस इन्फ्लेशन इट हैज बीन कंसिस्टेंटली हाई even before COVID-19 pandemic and the Ukraine-Russia war। Ukraine-Russia war। So एठी देखु जे हम फूड प्राइस गुडा को कंटीन्यूअसली इंक्रीज करू। So फूड जदि हम देखिबा इट अकाउंट्स फॉर नियरली 50% ऑफ हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर। ये हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर कितना 50% इन इंडिया लेस देन 10%। यूएसए रेट केते फूड एक्सपेंडिचर लेस देन 10%। बट इंडिया जदि हम देखिबा इट इज केते ना इट इज नियरली 50% ऑफ हाउसहोल्ड। Now high food price यदि food price का high हुए it significantly impact the cost of living। यार impact कहां पर पड़ेगा cost of living ऊपर पड़ेगा specifically कहां पर पड़ेगा ना poor mass। so they will be more vulnerable to price hike। यदि प्राइस बढ़े जो माने poor section of society सेमान को ऊपर अधिक अधिक impact पड़ेगा काहे की ना सेमान परचेज ही करि परिबेनी फूड ग्रेन्स बा फूड प्राइस फूड का तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फूड खाद्य वस्त्र बासगृह फूड शेल्टर क्लॉथ मिनिमम रिक्वायरमेंट तार प्राइस बढ़िले इंपैक्ट अधिक कहां पर पड़बो ना पोर ऊपर फूड इनसिक्योरिटी हमको देखिया पई मिले। नाउ फूड प्राइस इन्फ्लेशन इट हैज बीन positive every year since 2011। so there is a persistent issue or persistent growth in this inflation। so the food price को ignore करिबा in inflation targeting it will overlook a crucial factor it will affect almost all the Indians potentially worsening their living standard। हमें देखै तो दबा कि इन्फ्लेशन टा कम अछि फूड टा को हम एक्सक्लूड कर ले हम देखै तो इन्फ्लेशन रेट कम अछि प्राइस चेक करू छी बट एक्चुअली तार इंपैक्ट कहां पर पड़ियो तार इंपैक्ट पड़ियो सिटीजन मान को ऊपर तार इंपैक्ट पड़ियो जो माने पुअर पीपल से मान को ऊपर अधिक अधिक इंपैक्ट पड़ियो। नाउ सॉल्यूशन कोन हे परियो फूड प्राइस जो राइज फूड इंडिया रे अधिक देन व्हाट माइट बी द एक्चुअल सॉल्यूशन फॉर दिस आपे हम सॉल्यूशन कोन नै परियो ना प्रथम हला हम एटी कोन कर परियो ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर परियो we can enhance agricultural productivity कोन कर परियो enhance कर परियो agricultural productivity so it is GDP भी ग्रो करिवो per capita income भी ग्रो करिवो एवं प्राइस भी कंट्रोल हेकि रहइबो। फूड प्रोडक्शन जदी फूड इन्फ्लेशन टा हम ये करियो चाहते त प्राइस कंट्रोल होबा दरकार प्राइस केते बेले कंट्रोल हो फूड ग्रेन्स बा फूड प्रोडक्ट जदी सेटा कम टंगा रे मार्केट में मिलियो कम टंगा रे केते बेले मिलियो जेतोले तार प्रोडक्शन अधिक हो मन कर धान चावल ग्रेप्स मैंगो एप्पल ये सब प्राइस केते बेले कमियो मार्केट रे त प्रोडक्शन अधिक हो
सो आम प्रोडक्शन बढ़ी दवा ऑटोमेटिकली राइजिंग फूड प्राइस को बेस्ट सॉल्यूशन किए ना एनहांसिंग एग्रो प्रोडक्टिविटी यदि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दवा ताले फूड प्राइस रेट कंट्रोल हो देन कॉम्प्रिहेंसिव सप्लाई साइड पॉलिसी को यदि हम ठीक करबा सप्लाई माने इंफ्रास्ट्रक्चर जो अछि बा सप्लाई चेन मैनेजमेंट अछि फ्रॉम द फील्ड टू द मंडी फील्ड जो प्रोडक्शन होउची फार्मर कोची यदि मंडी पर्यंत प्रॉपर मार्केट पर्यंत प्रॉपर एक्सेस अछि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर अछि प्रॉपर जो स्टोर करि पाछे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी अछि कोल्ड स्टोरेज अछि ये सब ग्राउंड रे हम एटी करि करियो सो दैट वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव सप्लाई साइड पॉलिसी देन इंक्लूजन ऑफ फूड प्राइसेस इन इन्फ्लेशन टारगेटिंग फूड प्राइस को हम इंक्लूड करिया कोथरे ना इन्फ्लेशन टारगेट करिया पई जदि करूची देन दीज आर द इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू राइजिंग फूड प्राइस दीज आर सॉल्यूशंस एहो समस्त बुझी पारे मु ये भाबुची कि जहाँ जहाँ हम एटी डिस्कस करूचे एडिटोरियल एनालिसिस क्लास रे समस्त बुझछन एवं तार नोट्स करछन यदि नोट्स न करिवे पर हैरान हेबे ताको रिवाइज करि परबे विदाउट रिवीजन देयर इज नो मीनिंग ऑफ स्टडी जेते भी पढंतु रिवीजन आवश्यकता अछि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट तापर इंपोर्टेंट होची ताको यूटिलाइज करिया दरकार परीक्षा रे लेखिले तार लाभ पाइबे न लेखिले कोन वैल्यू अछि किछि वैल्यू नै तो आपन एटी लेखिया पई पडिबो परीक्षा तार नोट्स करंतु प्रत्येक सप्ताह यदि हम 8-10 टा एवरेजली यदि 8 टा 10 टा टॉपिक डिस्कशन करछे ऑन गोटे मासरे हमें पाखापाखि 30 टा टॉपिक डिस्कस करिया तो गोटे वर्षरे 360 टॉपिक भाई पड़ते 360 टॉपिक बर्निंग इश्यूज 360 बर्निंग इश्यूज पुनी मैगजीन क्लास आनी मैगजीन एनालिसिस आनी सेठी मध्ये आउ 300 टॉपिक पे 600 700 बर्निंग टॉपिक्स पर ईयर आपण पाउछन केतरा क्वेश्चन आसी 20 टा 25 टा क्वेश्चन आसी प्रत्येक पेपर 4 टा पर 100 टा क्वेश्चन 100 टा क्वेश्चन हमें प्रिपेयर होजे केतेटा क्वेश्चन केतेटा टॉपिक प्रिपेयर हेकि 700 टॉपिक प्रिपेयर हेकि जाउजे 700 इंपोर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर हेकि जाउजे तो मेंस में जो माने पढुछन से मानको मो मतलब जो माने क्लास पढुछन से मानको डर न लागबा दरकार यदि प्रॉपर्ली पढुछन जुडिशियसली ताहाले मेंस डेफिनेटली क्लियर होबो आ जो कंटेंट लिखुछन दिस कंटेंट इज गोइंग टू बी यूनिक समस्त ये कंटेंट लिखिबे ये कौन सी बहिरू बा कौन सी गोटे फिक्स सोर्स रु गोटे सिंगल सोर्स रु ये कंटेंट हमें नौने दैट आर कंटेंट कोन आर सिलेबस कोन ना डेली पेपर आसला सकाळे घरे पढिला समर सिलेबस पढिया काली की हिंदू पेपर आसीबो पुनी तार सिलेबस पढिगला ता पर दिन आसीबो पुनी सिलेबस पढिगला तो सिलेबस इंक्रीज होती डे बाय डे जे कोप अप करी करी चलचन से नॉलेज एक्वायर करिवे नॉलेज गेन करिवे परीक्षा लेखि अधिक मार्क पाए सो यार बेस्ट यूटिलाइजेशन करंतु याको आर फायदा उठांतु ये सेशन नो मेंस रे अधिक मार्क स्कोर करंतु नेक्स्ट टॉपिक पर आसीबा एन्श्योरिंग सोशल जस्टिस इन द ब्यूरोक्रेसी एन्श्योरिंग सोशल जस्टिस इन द ब्यूरोक्रेसी जोड़ा सिविल सर्विस परीक्षा अछि देन व्हाट इज द कंडीशन क्राइटेरिया कोन अछि वर्तमान सिविल सर्विस के एंट्री करिया प्रथम होची एलिजिबिलिटी ऑफ एज फैक्टर तो सिविल सर्विस एग्जाम डिफरेंट कैटेगरी पई होची जनरल कैटेगरी पई बयस केतना 21 से 32 वर्ष समझ जानि जंदी अटेम्प्ट केतना शॉर्ट अटेम्प्ट आईएएस परीक्षा पई एससी एसटी कैंडिडेट पई अप टू 37 इयर्स अनलिमिटेड अटेम्प्ट ओबीसी कैंडिडेट पई अप टू 35 इयर्स 9 अटेम्प्ट्स पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एमान को पई एज केतना अप टू 52 इयर्स यदि बेंचमार्क डिसेबिलिटी अछि with SC ST then 9 attempts for other categories. Sorry, age up to 42 character 42 years with unlimited attempt for SC ST and 9 attempts for other categories. PW BD हेले SC ST ପାଇଁ हेले unlimited attempt other category ପାଇଁ हेले 9 attempts हेले. So हम एटी देखिले यार ऑब्जेक्टिव कोन है एटी ensure social justice in the bureaucracy. So एटी ପାଇଁ अछि एरा these are the eligibility conditions ए क्राइटेरिया हम पाखर अछि. Now what is the cause of concern of वर्तमान प्रॉब्लम कोन होछि व्हाट इज द कॉज ऑफ कंसर्न ऑफ बर्तन इश्यू हमको कोन देखा पई मिलुची ना सिविल सर्विस रे जदि हम देखिबा स्पेसिफिकली सीनियर सिविल सर्विस रे जदि हम देखिबा जो माने वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी बा जो माने रिजर्व्ड कैटेगरी पेटी अछंदी को माने अछंदी ना ओबीसी एससी एंड एसटी एमाने दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड ताका नंबर अनुसार रिप्रेजेंटेशन इज लो एज कंपेयर्ड टू अदर कास्ट then lack of reservation in promotion ने मतलब reservation कम एज आउ एंट्री बैरियर मध्ये एठी रहउची कोन एज आउ एंट्री बैरियर जेते माने लेट रे एंट्री करिवे लेट रे एंट्री करछने 35 37 रे एंट्री करछो 42 पर्यंत अछि हम देखले एंट्री सो ऑटोमेटिकली से सीनियर केमि हो जने 42 रे एंट्री करबो जने 21 एंट्री करबो तो देयर इज अ गैप ऑफ 21 इयर्स 42 रे एंट्री करके 62 ईयर पर्यंत से सॉल्व करियो 21 एंट्री करके 62 ईयर पर्यंत सॉल्व करियो सो अप्रोक्सीमेटली डबल जे 42 रे जाउची से मात्र 18 वर्ष रिटायर करियो काम कला जे 21 23 रे जाउची से
केते वर्ष ना पाखापाखि 35 वर्ष 38 वर्ष काम करियो सो हायर पोस्ट गुडा सेक्रेटरी लेवल पोस्ट गुडा चीफ सेक्रेटरी लेवल पोस्ट गुडा किए रखिबो जल्दी जाइछि सो एज और एंट्री बैरियर होची इंपोर्टेंट जो माने सीनियर सिविल सर्विस पोजीशन में आसी पाउना एवं देयर इज लैक ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन आल्सो प्रमोशन रिलेटेड रिजर्वेशन पॉलिटी समस्त पढ़िथिबे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी एंड आर्टिकल 16(4)(a) इसु पढ़िथिबे देन फिक्स्ड यार सॉल्यूशन कोन हेबना फिक्स्ड टेन्योर प्रपोजल ये कुछ समस्त को पई जे जो एज रे एंट्री करछि करू समस्त 35 बा 37 ईयर पर्यंत सर्विस करियो 21 रे गले 37 सर्विस 37 ईयर 42 रे गले भी 37 ईयर सर्विस करियो बट ये तो एज अधिक हो जाइथिबो सेति पई ये कुछ 62 ईयर पर गोटे जनरल हेल्थ चेकअप हो प्रत्येक वर्ष मेडिकल डॉक्टर चेकअप करियो जदि से पास करूछि ताहले ताको काम दियो से काम रे कंटिन्यू करियो जदि पास करूनि ताहले काम करियो तो ये कुछ कोना फिक्स्ड टेन्योर सिस्टम है द नीड फॉर अ कमिटी गोटे कमिटी हमको दरकार जे कमिटी को एग्जामिन करिक रिकमेंडेशन करियो प्रॉपर रिकमेंडेशन करियो गोटे कमिटी जो कमिटी कोन कहबे ना ये जो कमिटी डिसाइड करबे कि ताको ए जो कंसर्न अछि हमर कि इन द सीनियर सिविल सर्विसेज देयर इज अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैकवर्ड कास्ट से मानकर कि हायर रिप्रेजेंटेशन कर दैते सेम कथा हम देखु सो देयर इज अ नीड फॉर अ कमिटी देन देयर इज अ पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम कोर इश्यू को छाड़ के पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन रिलेटेड टू रिजर्वेशन बैकवर्ड कास्ट को लेके देयर इज अ politics of identity or there is a politics of your caste in India caste को लेके politics so we are going away from the core issue empowerment what is the core issue is empowerment core issue is social justice we are moving away from or going away from the core issue of social justice or ensuring job availability or ensuring proper representation to the people belonging to the backward caste proper job resource allocation न करी हमें तार दूर को जाऊ and we are politicizing the matter हमें political distraction को so this is the cause of function then what is the solution हमें the solution कौन कर पारे what is the way forward we can implement fixed tenure for civil servant already कहली मन कर नबा हमें let's say 35 year of service 35 years of service जो एज रे आसु 35 years से सर्विस करी enhance करबा में रिजर्वेशन पॉलिसीज को स्पेशली इन द योर कंसीडर पूछे हमें सीनियरिटी बा प्रमोशन रे रिजर्वेशन means strengthening training and capacity building बढ़ेगा training बढ़ेगा so that their contribution will be more contribution को increase करिया पाए so this is a question on contribution increase करियो माने कोन ये कहां पर हमें क्वेश्चन पूछे contribution increase करियो माने हमें एटी क्वेश्चन पूछे on the quality of service being delivered quality of service independent review committee करियो जे review करियो कि properly whether they are represented properly or not e-governance एवं transparency को हमें promote करि पारे कोन कर पारे कहली we can promote e-governance and transparency so these are the way forward जहा को हमें ensure करि परिबा कोन ना social justice एक्सपेक्ट समस्ते एई पर्यंत बुझिले समस्ते एई पर्यंत बुझिले मु भाबुची कार कोन से डाउट नै सो आज टॉपिक रे जहां जहां डिस्कस ले तो इंपोर्टेंट पॉइंट कोन एटा हम देखले सोशल जस्टिस एस्टैब्लिशिंग और एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इन ब्यूरोक्रेसी social justice in bureaucracy then we discussed about sustainable employment most important in then we discussed about quota for locals then now we discuss about national flag then we discussed about the Bangladesh issue पर डिस्कशन कले ना आउ को पॉइंट पर डिस्कशन कले हमें then we discussed about इंडिया इन्फ्लेशन प्रॉब्लम पर डिस्कशन कले एवं खादी ऊपर डिस्कशन कले जीडीपी शेयर टा केमति रिड्यूस होची इन द वेलफेयर स्कीम रे जीडीपी शेयर टा केमति रिड्यूस हो जाउची ता पर डिस्कशन कले सो दीज आर द इंपोर्टेंट टॉपिक्स जहां पर हमें डिस्कशन कले याकू नै कि लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो शॉर्ट क्वेश्चन में मते ये हेल्पफुल होबो आगु को मु क्वेश्चन एथु कोन आसी परबो दे देबी
लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन किसी एमसीक्यू मध्ये ई पर्टिकुलर टॉपिक मानक ऊपर हमें प्रैक्टिस करिया। सो ये सब को पढ़ंतु जहाँ जहाँ हमें पढ़िले सब टॉपिक को पढ़ंतु जो जो टॉपिक को हमें पढ़िले केमती पढ़िबे हम कहि ना नोट प्रिपेयर करिवे जीएस 1 2 3 4 चारटा खाता करिवे रिलेवेंट पोर्शन को लेके सेट रखिवे जोड़ा कंबाइनिंग जोड़ा को मिसलेनियस आसुची जीएस 2 3 मिसी के आसुची ताको गोटे जगह रखिवे लिखि देबे बोथ जीएस 2 एवं 3 रे आसुची बट ताको रिवाइज करंतु बारंबार एबेठु जो माने पढ़िबे धीरे धीरे पढ़िबे ग्रेजुअली प्रत्येक सप्ताह रे हम जहाँ जहाँ पढ़ी जाउछे पढ़ी चलिबे ना वर्षे पर 6 मास पर तो परीक्षा देवा जिबे जेतल देखिबे देन यू विल हैव अ कॉम्पिटिटिव आपन पाखरे गोटे बही पूरा हो जाइथिबो पूरा गोटे बही हो जाइथिबो बा गोटे बहुत बड़ डिक्शनरी हमें कहि परिबा करंट अफेयर रिलेटेड डिक्शनरी कहि परिबा बा हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस कहि परिबा हो जाइथिबो तो ताको यूटिलाइज करिवे तो हमको खाली तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करियो आंसर राइटिंग बेसी भी प्रैक्टिस करियो नै ठीक भाबे पढुनी ये ऑलरेडी इंट्रोडक्शन बॉडी पार्ट कंक्लूजन एंगल लिखा है सेम कंटेंट हमको रखियार अछि तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हला आपको रिवाइज करियो बारंबार पढिबा एवं मन रखियो once you remember all those things then just put it in your answer paper ये हमर बेसिक ऑब्जेक्टिव तेणु समस्त ये क्लास को बेनिफिट उठांतु आपको पढंतु यदि किसी डाउट आसुची देन मते कमेंट सेक्शन में जणांतु कि ये प्रॉब्लम रे सर पॉइंट रहउची आई विल अगेन क्लैरिफाई तापर आई विल गेट बैक टू यू से पॉइंट को मु डेफिनेटली डिस्कस करी सो आई होप ये सेशन समस्त को जो माने देखुतनी ये सेशन नो बेनिफिट उठाउचंती मु भाबुची माने प्रिपेयर होचन से मानक पाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल सेशन को यूटिलाइज करंतु इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज कम बैक so let's wrap up this session हमें पूरी नेक्स्ट क्लास में आगु डिस्कशन करबा एंड इन द मीन टाइम जहाँ जहाँ पढ़ेली ताको प्रैक्टिस करंतु लेखंतु एवं एंड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन so that's all for from my side in this session see you in the next class that's all for this session thank you very much thank you